Good morning. Welcome you all for the class. As you know, today we are discussing the new concept of AP, which we introduced and we discussed the basics of it last time, right? And today we will be starting with the sums based on that formula. So we saw that AP, that is arithmetic progression, right? I'm sorry, by mistake I shared this link with class 6. It is not for you. This is for class 10. So if any class 6 student are there, you can leave it, please. And this is class 10 AP class, arithmetic progression. Fine. So I think Shannon, Rene, you can leave it, please. Okay. Even Sandhya, Manorama Kumari. So you can leave it at class 10. By mistake, I put it in class 10 to this link. I hope class 10 students are with me. Okay, good morning to one and all present here. Very few today. Okay, so we will be starting with our AP sums. And here you will notice that the pattern, what is arithmetic progression, is facing a sequence of number which has the difference constant. Okay, what is the definition of AP? Arithmetic progression, that is a sequence or a pattern of number, or you can say progression of number will follow arithmetic, that is, it follows the common difference, that the difference between two consecutive terms is same. And using this logic, AP is defined. Fine. In this, we generalize it, the first term of the progression as A. Okay, the common difference as B. Common difference is the difference between two consecutive terms which will be same. So we will say common difference as B. Say number of terms are n, or when we talk about the number nth term particularly, then we could define nth term. See, n terms difference, एक ये चीज समझ लो, ये दो वर्ड के बीच में डिफरेंस है. एक है n terms एंड दूसरा है nth term. इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस. n टर्म्स का मतलब है कि कितने टर्म्स है. वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म, 10th टर्म या 10वीं टर्म, मतलब ये कितने हैं. टोटल 10 टर्म्स है, 15 टर्म्स है, 20 टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है. ओके, कितने टर्म्स है टोटल, 100 टर्म्स है, 50 है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट nth टर्म, मतलब कि वो टर्म कौन सी है. ओके, वो टर्म कौन सी है. nth टर्म मतलब कि जो, सपोज मैं कहूंगी कि n is 10, तो 10th टर्म कौन सी है. 10 is a number that जो 1 2 3 4 5 6 में 10th टर्म. ओके, तो 10th n10 यानी कि 10th टर्म क्या है, तो वो यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे. इस nth टर्म को हम डिस्क्राइब करेंगे एज an. ओके, और इसका फॉर्मूला हमने जो बनाया था लास्ट टाइम जनरलाइज करके, इट इज nth term is equal to a plus n minus 1 times t. Right? This is clear to all of you. This is the nth term ka formula. And so here you can say unknown 1, 2, 3 and 4. Where an, that is nth term, a is the first term, n number of terms, and b is the common difference. So out of this 4, 3 will be given to you, so you can find it out. It may happen that 2 are given to you and you have to find out the rest too. In that case, you will get the 2 information, that is, you will get the 2 equation which will be in terms of linear equation with 2 variables, and we could solve it and we can get the AP. So हम basic यहाँ पे start करेंगे. Okay, first of all, as I told you, I'll just have one basic question, that whether it is an AP or not. पहले तो आपको चेक करना है कि is it an AP, और इसके लिए मैंने कंडीशन बताई थी क्या, कि डिफरेंस सेम होना चाहिए. यदि डिफरेंस सेम है तो वो AP है. ओके, उसमें से एक मैं बेसिक क्वेश्चन ले रही हूँ. बेसिक इन द सेंस, यहाँ पे इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट है. ओके, यू आर फेमिलियर विद रैशनल नंबर्स, यू आर फेमिलियर विद इरेशनल नंबर. और एक जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, दैट इज दिस वन. चेक फॉर दिस. Okay, which of these are AP, and if it is, then you have to find out. The question says it is something like
root 2, root 8, root 18, root 32, and it go on. We have to find out whether this is an AP or not. I mean, whether it is AP. मतलब कि AP है या नहीं है. नहीं है या है के लिए हमें क्या करना है? Difference find करना है. So we have to define the difference between two consecutive terms. तो पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ given. तो second term minus first term. Root 8 minus root 2. Now you have to remember the concept of your class 9. Okay? This is mixed surd form. ठीक है, इसको आप सॉरी दिस इज प्योर सर्ड, आप इसको मिक्स फॉर्म में डालिए, यानी कि इसको कंप्लीट फैक्टराइजेशन करिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये कंप्लीट स्क्वायर है, bring it out so it becomes 2 root 2. Got it? याद आया आपको? And then it's my when I write root 8 it is 2 root 2 minus root 2. तो मैं थोड़ा सा इसी तरह लिखती हूँ. So we get this the difference as 2 root 2 minus 1 root 2 6. Okay, now let's keep the difference between the second term and the third term. So root 18 minus root 8. Don't write this as root 10. Please, ये नहीं लिखना है. इस तरीके से irrational number में addition subtraction नहीं होता. Root 18 minus root is root 10. Please don't do that. Now let's go for root 18. Completely factorize inside. So it is 3 into 3 into 2. 3 is a perfect square. 3 3 is a 9 perfect square. You take it out. So it is nothing but 3 root 2. So this is 3 root 2 minus 2 root 2. What is the difference here? Again 1 root 2. उसी तरीके से if you will see the difference, third difference, root 32 minus root 18. Could you guess what would be root 32 here? 32. 2 to the 4 to the 8 to the 16. 2 to the 32. और ये 4 16 का square root क्या होता है? 4 and this root 2 alone. So this is nothing but 4 root 2 minus 3 root 2. So that means क्या कर generalize करेंगे? The common difference D is equal to root 2. सब में root 2 difference आ रहा है and therefore root 2 root 8 root 18 root 32 is an understood? ठीक है, ये एक सम है जिसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं. You forget the concept of irrational numbers and you make mistakes, so be very careful about it. Okay, अब इसमें क्या कहा है कि write 3 more terms. Okay, ये AP है तो आप इसके आगे के 3 terms बताएंगे. So could you tell me the answer further? इसका आंसर आगे क्या हो सकता है? So this AP actually you understand this is root 2, 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2 का next क्या होनी चाहिए? With this logic क्या होनी चाहिए आपकी next term? It is nothing but 5 root 2 और 5 root 2 को 5 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होता है? 5 is 25, 2 is 50, so root 50. इसके बाद आगे क्या होना चाहिए? 6 root 2, isn't it? So 6 root 2 क्या होता है? 6 को अंदर ले जाओ तो आप कैसे लिख सकते हो? 36 2 is 72, so root 72 and 7 root 2, so it is root 98 and so on. I hope this is clear to all of you. Yes, I hope you understood this sum. Clear? Okay. I have some confusion why such low strength. आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि these chapters are not important and it's very sad. पता नहीं आप लोगों के friends को कहाँ रहते हैं समझ में नहीं आता है. Okay. So with this logic, there are about 10 questions are there. If you see your first exercise, okay. If not, I'm sending you the soft copy. I think मैंने इस chapter के भी दे दीजिए, ठीक है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी टाइप का है और जो फर्स्ट क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट है इट्स योर टैक्सी क्वेश्चन ऑफ क्लास 9. ये मैं हिंट दे देती हूँ. यू कैन ट्राई दिस. देन इट इज अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर. ओके, जब भी आप व्हाट आर दे सेइंग, आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द क्वेश्चन, आई मीन आई जस्ट पिक अप द क्वेश्चन, यू लिसन. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर. एक सिलेंडर में जितनी अमाउंट प्रेजेंट है, अमाउंट इज नथिंग बट वॉल्यूम. When a vacuum pump removes 1/4 of air at a time, तो 1/4 of air निकाल रहा है तो first of all suppose total volume V है तो 1/4 उसने निकाल लिया तो बचा कितना है? तो नेक्स्ट टाइम में जब बचा कितना तो 3/4 बचा. अब 3/4 में से भी फिर से 1/4 निकाल लिया तो 1/4 ऑफ मतलब कि 1/4 निकालिए तो बचा कितना? 3/4 ऑफ 3/4 बचा. ओके,
फिर से 1/4 जो निकाल लिया जो था उसका, तो यानी कि 3/4 वॉल्यूम, इसको आप नंबरिंग फॉर्म में will it follow arithmetic progression? If you see this is some with something with a product, isn't it? 3/1 complete volume, then 3/4, then 3/4, then 3/4. Obviously, it will not follow arithmetic progression. Difference follow nahi hoga, difference same nahi hoga. So in this case, it will not be a, it will not be an arithmetic progression. The second is the cost of digging well after every meter of digging. When it costs rupees 150 for the first meter, for subsequent 50-50, मतलब पहले के लिए आप 150 रुपीज दे रहे हैं, सेकेंड मीटर जब डिग किया तो उसके लिए 50, फिर और थर्ड मीटर दिया तो उसके लिए और 50. तो पहले आपने 150 दिया, फिर 2 मीटर के लिए आपने 200 दिया, फिर 3 मीटर के लिए आपने कितना दिया, 150 प्लस 50 250 दिया, फिर 300 दोगे ज्यादा होगा तो, और एक क्रम आगे जाएगा तो 350 400. सो कैन यू सी 150 200 250 300 मिल रहा है, डिफरेंस कांस्टेंट एंड देयरफॉर इट इज एन 8. तो इस लॉजिक के साथ आप समझने की कोशिश करोगे. You will write down the sequence and you will see whether it is an AP or not. And if it is AP, you have to write 3 more terms. So these are the questions. और एक हिंट मैं दे देती हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम होगा इट्स अ ज्योमेट्रिक वन, मतलब वो AP नहीं होगा, पर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा तो हमेशा AP होगा. सो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस. जो भी है सारे उसी के रिलेटेड है. आपको AP में से फर्स्ट टर्म और उसकी बतानी है, AP और उसके बताने हैं. ठीक है, AP है दिया हुआ है तो फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म्स आपको फाइंड करना है. सो आई होप यू कैन डू इट. इट्स अ वेरी सिंपल वन. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द next kind of questions here. That is, we deal with the actual sums which are important for you. So please, this was the basics. I don't say it is not important. It could come for one more question also. तो जो typical जो 5 या 6 टाइप के sums है जो हम सीखने वाले हैं, जो मैंने आपके लास्ट के एंड लेसन में बताए थे. So let's begin with that. I'm talking about your second exercise question. Okay. तो इस टाइप के questions में यहाँ करना क्या है? So please थोड़ा सा ध्यान से, एक टिपिकल वे है. I'll tell you that there are 5 to 6 type of questions. मैं notes बनाऊंगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा. Okay, 5 or 6 type of questions हैं, वही आपको करना है. एक पैटर्न है, there is a particular pattern it is followed, it's being followed. तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. This is a totally new topic, but quite scoring also. Fine, so you don't need to worry about it. But एक है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को एम्फसाइज करो. यहाँ पे कभी भी इट्स अ पैटर्न. आप है ना क्वेश्चन को यदि ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपके आगे आधा सम आपको समझ में आएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन दिया, मींस यू नो व्हाट इज टू बी डन एक्चुअली. तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर उसको जर्नलाइज करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो यू विल कम टू नो कि दिस टाइप ऑफ वर्डिंग है तो मुझे इसमें इस मेथड फॉलो करनी है, ये टाइप का क्वेश्चन पूछा तो मुझे ये मेथड फॉलो करना है. सो दिस इज अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो लेट्स बिगिन विद इट. ओके, सो यहाँ पे है, यू हैव टू फाइंड आउट द 30th टर्म. यू हैव टू फाइंड आउट द 30th टर्म. क्वेश्चन है, अब दिया क्या है आपको, AP दी है 10, 7, 4, dash dash is an AP. चलिए, आपको AP दी है और आपको 30th टर्म फाइंड करनी है. व्हाई दिस चिल्ड्रन आर लेट दिस टाइम, आई डोंट अंडरस्टैंड. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी आपको पता है, ये AP है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 8 10, और डिफरेंस क्या होगा, तो D हम कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. देखिए मैं ये एग्जांपल पर्टिकुलरली क्यों ले रही हूँ, यहाँ पे इफ दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो आपका D इसमें नेगेटिव आएगा. सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर नहीं करना है, सेकेंड इज फर्स्ट टर्म. So therefore you get this D is minus 3, यानी कि D minus 3 आ गया. A आपके पास 10 है, आपका AN का फॉर्मूला, और आपको फाइंड क्या करना है 830. इसका मतलब N क्या है, तो ये 3 नंबर आ गए आपके पास, 3 है. व्हाट इज द फॉर्मूला AN. और प्लीज इसको याद रखिए कि इसको ऐसे नहीं लिखना है. ओके, मेनी ऑफ यू गेट कंफ्यूज्ड. इट इज नॉट AN. Do we speak as AN? It is A, आप सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट पता है ना,
तो सब्सक्रिप्ट नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे हमेशा, आपका फॉन्ट भी इस तरीके से हो. So a plus n minus 1 times b. So nth term we don't know that, so we need to find it out. But yes, I'll call these as a 30th. First term हमारी 10 है, n हमारा 30 है, -1, b is -3. बस इसमें जो कॉमन देखा ना, मैंने देखा जहां पे बच्चे मार्क्स जिनके जाते हैं, ओके, वो एक ही पॉइंट पे जाते हैं. आई होप आई एम क्लियर टू यू. जो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मार्क्स कट होते हैं ना बच्चों के, एक ही की वजह से कभी कट नहीं हुआ है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइनस एंड प्लस साइन. तो आपके इंटीजर का कॉन्सेप्ट, आपका क्लास 6 का कॉन्सेप्ट अच्छा हुआ ना, तो इसमें कोई चांस नहीं कि आपके मार्क्स कट हो. जो भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है, बट इसमें मार्क्स कट होंगे बिकॉज ऑफ माइनस प्लस साइन. इफ यू विल नॉट बी केयरफुल, देन यू विल get it wrong. Means if you make mistake, और मिस्टेक होने के चांस माइनस प्लस में ज्यादा है. सो बी वेरी केयरफुल. स्पेशली ब्रैकेट को आप इग्नोर करते हो, सो बी केयरफुल. सो ये 10 प्लस 29 into -3. एंड प्लीज 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 सबने बोर्ड मास सीखा है, क्लास 6 पढ़ा है, ठीक है. क्लास 6 में आपने पहले से पढ़ा है बोर्ड मास. व्हाट इज बोर्ड मास? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है. तो इस लॉजिक में यहाँ पहले प्लस नहीं करना होता है. इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट यू are tending to make mistake and maybe some hurriedly or some confidence or some lack of confidence, I don't know that part, but some mistake होती है. So be very very clear. ये जो प्लस साइन है, भले ये पहले, पर आपको पहले क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. and hence it is 29 3s are 87, but it is minus. Plus into minus is minus. So therefore 830 is equal to -77. So this is the answer. I hope this is clear to all of you. Yes? Yes, children. This is class 10th going on. So by chance any class 6th have joined, then please, you can go, you can leave. I don't know, there was some mistake from my side. I by chance posted to class 6th group. So please, you can leave it. It's not for you. It is for class 10th. Okay? I hope this is clear to all of you. Yeah. Thank you. And now, we move on to the other sum of question number 3 of your textbook. What does it say? Question number 3, we have given some boxes kind of, and you have to find out the missing terms. Okay, so I'm taking question 3 का second question. पूरा सा मैं इसमें sequence में textbook की maintain कर रही हूँ, so that you are able to do it and you can start doing it. So exactly today 5.1 you have to complete it your own. ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा notes जैसा as such नहीं है. जो सम्स है उसके एक मेथड है सॉल्व करने की. सो आई विल सेंड इट. और मैंने आई थिंक फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है. एंड एनी टाइम आप जैसे अभी वीडियो चल रहा है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. जैसे ये सम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सो यू नो हाउ टू राइट दिस, इजंट इट? तो वो आप ले सकते हो. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग पॉज इन बिटवीन कि आप ये कर सको. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट सो यू नो हाउ टू डू दिस सम. फाइन. एंड लेट्स मूव ऑन. Number 3, I'm talking about second exercise, question number 3. So इसमें missing terms find करनी है, that is remaining terms find करनी है. So question number 3 का I'll go with the second part first. So what does it say? Box है, फिर second term हमें दी है 13, वापस से third term question mark, and you have to find given fourth term is given. Fine. देखते हैं इसको कैसे करना है. Go ahead with it. So first term we don't know. This is A. We are not aware. Okay. So A is question mark. First term is question mark. A2 is 13. And again A3 we don't know. And A4 is 3. ये चार हमें दिया हुआ है, ठीक है. इतनी चीजें, मतलब चार यहाँ पे 2 बॉक्सेस और ये. We are not aware with the common difference also. Okay, but you know what is A2? कैसे बताना है आपको? फॉर्मूला A plus n minus 1 टाइम D. तो n2 हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 minus 1 plus 3. तो मैंने कहा था ना पहले, कल जब फर्स्ट सेशन मैंने जब फर्स्ट पॉइंट किया था आपका फर्स्ट सेशन, तब मैंने कहा था ये आपको तुरंत ही स्ट्राइक होना चाहिए. जैसे ही मैंने लिखा A2 is 13, it means you should know. Therefore A plus D is equal to 13.
और A4 is 3, A4 is 3, इसका मतलब क्या हुआ? A plus how much? 3D, एक कम is 3. I told you we need two terms, A and D दोनों हमें find करने, because to find out third term I required D also, isn't it? So what is this? Chapter number 3. Linear equation with two variables. So you could see, और यहाँ पे कोई ज्यादा मेथड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट टाइम अकेला ही है, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ करने की जरूरत नहीं। Therefore A plus D 13, A plus 3D 3, subtraction. So A gets cancelled, B minus 3D, that is minus 2D, is equal to 13 minus 3, 10, and therefore B is equal to minus 5. ठीक है? And hence A plus B is equal to 13. B हमें क्या मिला? When you write minus 5 directly, and therefore A is equal to 13 plus 5. यानी कि A, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी मिल गई आपको 18. अब आपको क्या फाइंड करना है? थर्ड टर्म. एंड व्हाट इज थर्ड टर्म का फॉर्मूला? A3. जैसे ही आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए. A3 का मतलब क्या है? A plus 2. A plus 2B. That is first term plus 2 times of D, and that is 18 minus 10. I'm sorry, 18 minus 10, that is 8. या तो इसमें से भी 13 minus 5. नेक्स्ट टाइम क्या होगा? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें से करना है, तो 13 minus 5 वो भी आपका देखा है. I hope this is clear to all of you. Yes, children, please quickly have a quick look. या तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भी आप ले सकते हो उसका. Okay, I hope this is understood to you. You can take the screenshot, because I'll be giving you the generalized ones method. So solving method के लिए you can take the screenshot. That's all. So you don't have to bother much. I hope you have taken the screenshot. And similar ground, you will be solving the sums. Okay. And now we move on to our next question, which says which term. Please थोड़ा सा question के ध्यान से सुनिएगा. Which term? Okay, which term of AP? Okay, I go ahead. I'm discussing question number 4 of second exercise. It says which term, मैंने कहा था which term का मतलब आपको पता होना चाहिए. Which term of AP? अच्छा, AP हमें दी हुई है 3, 8, 13, 18 is 78. हमें ये पूछा गया है. अब आप देखिएगा क्या फाइंड करना है आपको. Which term of this AP is 78? इसकी कौन सी टर्म 78 है? Got it? तो ये 78 क्या है आपको समझ में आया है, और आपको फाइंड क्या करना है वो वेरिएबल आपको समझ में आया है. सो हमें AP भी है. सो वी आर गिवन विद आवर फर्स्ट टर्म. सो व्हाट इज योर D? Consecutive term का difference 8 minus 3. So just positive 5 here. D is 5. You can write this directly. And we know term is given to us, isn't it? So हमें नहीं पता इसका नंबर क्या है. So AN is 78. Which term मतलब कौन से नंबर की term 78 है? And hence N is a question. Means you have to find out N. मतलब कि कौन से नंबर की term 78 है? This is your question. I hope this is clear to all of you. Okay, solve करना बहुत आसान है. We use our formula. AN is equal to A plus N minus 1 times B. We know this is 78 kind of equation. We don't know this part. Okay, so this यहाँ प्लस में है. अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस है, यहाँ वेरिएबल है. So अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए. बॉर्डर मार्क मैंने कहा ना, क्लास 6 के कॉन्सेप्ट आपके साथ बहुत कनेक्टेड है. N minus 1 times 5, isn't it? N minus 1 times 5. तो इसको आप टच नहीं करेंगे. पहले आप इस प्लस को यहाँ माइनस में ले जाएंगे. So this is 78 minus 3, and this is N minus 1 times 5. I hope आपने क्लास 8 के आपके इक्वेशन 7 and 8 के बेसिक इक्वेशन विद वन वेरिएबल उसको ध्यान रख के चलना है. तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है. So we get this as 75. अब जनरली बच्चे यहाँ ओपन करते हैं ब्रैकेट, जरूरी नहीं है ब्रैकेट. यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे ले आइए डिवाइड, is equal to N minus 1. ब्रैकेट भी ओपन हो गया. 15 5 75. ये माइनस 1 है, इस तरफ आया. And therefore N is equal to 6. I hope this is clear to you. देखिए पहले हमने
हमें A30 यानी कि 30th टर्म क्या है वो हमने फाइंड किया। उसके बाद हमें दो टर्म दी थी जिसमें फर्स्ट टर्म भी नहीं थी, डिफरेंस भी नहीं था, फिर भी हमने लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल यूज करके हमने ए फाइंड किया, डी फाइंड किया, और उससे हमने दूसरी टर्म्स फाइंड की। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, हमें एपी दिया हुआ है और कोई टर्म दी हुई है हमें जिसका नंबर हमें नहीं पता, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि ये टर्म कौन से नंबर की है। सो वी हैव टू फाइंड आउट एन। गॉट इट? हमने पहले ए एन फाइंड किया, फिर हमने ए और डी से डी फाइंड करने की कोशिश की, और अब यहाँ पे हमने एन फाइंड किया। ओके, सो आई टोल्ड यू वन इक्वेशन, आई मीन वन रिलेशनशिप विद फोर वेरिएबल्स। तो एनी टाइम तीन दिए हैं तो हम एक फाइंड कर सकते हैं, और यदि दो फाइंड करना है, ए और डी दोनों फाइंड करना है, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगे। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो विद दिस लॉजिक फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, फाइंडिंग एन। ठीक है, and I move on to your question number 6, one of the favorite question of like in the exams. I hope you have taken the screenshot for this. Take it if not. Okay, and the question number 6, till that I repeat the question. If you have not taken the screenshot, please take it. The question says check whether, मतलब कि अभी वेदर आगे हमें पता नहीं है नहीं है, दो पॉसिबिलिटी। -150 is a term of AP 11, 8, 5, 2। लेकिन यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि आप चेक करिए कि ये जो टर्म है -150, क्या वो AP की टर्म है कि नहीं। Before starting this sum, I would just try to bring it to your notice. हमने n क्या लिया? What is n? Number of term। तो आप नंबर मतलब आप काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 6, राइट? एवरीवन नोज ये काउंटिंग नंबर्स है, और काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। और नेचुरल नंबर्स मतलब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब ही नेचुरल नंबर होता है जो काउंट कर सकते हैं। एंड दैट मींस व्हेन यू आर काउंटिंग, दैट मींस इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, डजंट इट? वो कंप्लीट नंबर होता है। सो दैट मींस यदि जो टर्म हमें दी हुई है दैट ए एन -150 है, और हमारी एपी जो हमें दी हुई है वो है 11, 8, 5, 2 मतलब एक एपी दी हुई है। क्या ये -150 है, क्या उस एपी को बिलोंग करती है कि नहीं करती है, ये हमें चेक करना है। प्लीज रिमेम्बर दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड यू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो करती है कि नहीं करती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको एन ही फाइंड करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको ए पता है, आपको डी पता है, 8 -11 यानी कि -3, अगेन इट्स अ नेगेटिव। ओके, अब आपको एन दिया हुआ है तो आप एन फाइंड करिए। अब ये एन आपका कंप्लीट नंबर, होल नंबर यानी कि नेचुरल में, अदर देन जीरो, इससे जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको पता है, तो ये कंप्लीट नंबर आना चाहिए। फाइन, इट कुड नॉट बी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन आ रहा है तो आप ये कहोगे कि भाई ये टर्म इस एपी की नहीं है। यदि ऐसे 15, 20, 30, 40 ऐसे आ रहा है तो यस यू कैन काउंट, कंप्लीट नंबर है तो आप कहोगे ये टर्म एपी की है। ओके, आपका एन यदि आपको फ्रैक्शन मिल रहा है, नेगेटिव तो नहीं मिलेगा बट फ्रैक्शन मिल रहा है, तो आप कहोगे ये टर्म एपी की नहीं है। सो अल्टीमेटली इस समय भी पहले हमें क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। This is class 10th going on, so please class 6th leave it. I think मैंने delete भी कर दिया, just 1 minute, please. Let me check what's wrong with it. I think I deleted it. Okay, fine. Let's move on. So we go with the formula. An is equal to a plus n minus 1 times b. So this is -150, 11. n minus 1 we don't know. It is similar to the previous question. So -3. So therefore -150 -11 ये इस तरफ आ गया is equal to n minus 1 times -3. Don't open this bracket. Now what is this? -161. Addition हुआ ना, दो नेगेटिव नंबर है तो is equal to n minus 1 times -3. ये -3 या मल्टीप्लिकेशन है तो इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा। So -161 upon -3 is equal to n minus 1.
इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिल रहा है, n इज इक्वल टू 161 एलसीएम लेना आता ही होगा, क्लास 10th में हो तो 161 plus 3 upon 3 that is 164 upon 3. ओके, क्या मिल रहा है हमें? यस, इस नंबर, क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है मिक्स में? नहीं. And therefore we will say minus 150 is not a term of given. समझ में आ रहा है आपको? And therefore we say that number, yes, it is a fraction, it's a mixed number. ये complete number आपका नहीं है. It is something like 3 5s are 15 and the 3 4s are 12. इसको मैं something like 12 upon 3. This is like a fraction. Okay, this is not a whole number. आपका integer, positive integer. या तो मैं इसको generalize कर दूं तो n has to be a positive integer, isn't it? तो ये positive integer यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये वाला, let I just delete this message because everybody is joining here by mistake. And that's why they will say, I hope you have taken the screenshot with this. So please go through it. I hope that is clear to all of you. Yes, children. This is class 10th AP class. I hope this is clear to all of you. आपको आपने screenshot ले लिया होगा. Okay. So I hope this is clear to you. And then we move on to our next question. देखिए एक पर्टिकुलर पैटर्न है करने की, like you know, now you have to remember, जैसे यहाँ पे अभी आपको दिया नहीं कि आप n find करिए, but now we have to understand कि जब find whether it is a term or not, इस टाइप का क्वेश्चन है कि टर्म है कि नहीं है, एपी को बिलोंग करती है या एपी की टर्म है, जब ऐसे पूछा तो आपको n ही फाइंड करना है, ये आपको याद रखना है. थोड़ी पैटर्न, तो ये पैटर्न आपको याद रखनी कि वो n है कि नहीं, मतलब ये टर्म है कि नहीं, तो उसके लिए आपको n फाइंड करना है और n आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर. So I hope this is clear to all of you. And now we move on to the next question which is similar to, but word problem है इसलिए मैं ले रही हूँ. उसमें भी I would like to go with not with the 7th term, I'll go with the 8th term. If you have the textbook, you can read it. By the time I wrap it up, question number 8 of second exercise. First exercise में सारे आपके basics हैं. So you are going to solve those sums. AP है कि नहीं, और AP है तो बाकी के terms find करिए, उस type के questions हैं, right? So please solve it and ask your friends to attend the class, children, because this is for your benefit. अभी तो कोई ज्यादा syllabus deletion इसमें है नहीं. This is one of the important concept. Okay, चलिए हम लेते हैं question number 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12. 50 टोटल, और उसमें थर्ड टर्म जो है वो क्या है, 12 है. थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को मैं लिखूंगी कैसे, थर्ड टर्म इज 12 and the last term is 106. लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म मतलब कौन सी होगी, तो ये दिया हुआ है कि ये जो एपी है वो इट कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. टोटल कितनी टर्म्स है, 50 है, तो नेचुरली लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50th टर्म होगी. I hope this is clear to all of you. Okay, I'm repeating the question. An AP consists of 50 terms. 50 terms की AP है, जिसमें थर्ड टर्म 12 है और 50th टर्म मतलब लास्ट टर्म बोला है उन्होंने, तो लास्ट टर्म मतलब 50th होगी क्योंकि टोटल 50 टर्म्स है उसमें. So 50th term is 106. We have to find it out 29th term. Okay, देखिए ना यहाँ पे AP दी हुई है, सिर्फ हमें दो टर्म्स दिए, मतलब कि दो इक्वेशंस दिए हैं. वो कौन से इक्वेशंस हैं, that we have to look for it. A3, I mean A3, that is third term. Third term is equal to what? याद आया, बिना फॉर्मूला लिखे. Come on, let me write down the formula which will help you to get it. N minus 1 times P.
तो n ये 3 है, 3 minus 1 क्या हुआ? That means a plus 2d is equal to 12. And with this logic, 50, a 50. So a plus 49. So that means a plus 49b is equal to 106. Got it? हो गया पहले जैसा. We got two equation and two unknowns. क्योंकि हमें जब AP चाहिए, AP मतलब हमारे पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो तो भी हम AP बना सकते हैं, isn't it? और या तो आगे की टर्म्स भी फाइंड करना तो हमारे पास A और D होना बहुत जरूरी है. Fine. So solving this equation, A plus 2B is equal to 12. A plus 49B is equal to 106. Subtraction. Okay. 49 minus 2. तो मैंने यहाँ पे बड़ा नंबर को नीचे ले लिया. So have to be careful with the minus sign, isn't it? And 12 minus 106. So 6 यहाँ पे 12 minus करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 and 10 तो minus 94. Negative आएगा तो फिर दोनों negative नंबर. So it gets cancelled and therefore B is equal to 94 by 47. कितना होगा? 47 2s are 7 2s are 14, 4 2s are 18 1 9. So we get B as 2. Using it in first equation, therefore a plus 2 into 2 is equal to 12. So a is equal to 12 minus 4. So we get a as 8. अब आपके पास a है, अब आपके पास d है, तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो with the same formula. Hence a29. a29 मतलब क्या होता है? a plus 28 c. That's all. This is a method, isn't it? अब समझ में आ गया ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है. जब 29, 3rd, 50 कुछ भी है, मतलब कि आपको इस फॉर्म में याद रहना चाहिए. एंड a plus 28 भी मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओके, सो दिस इज a is 8 plus 28 times 2. पहले multiply फिर a add. So 22 is 56 and hence a29. 6 plus 8, how much? 14, 64, right? Yeah, this is. And hence this is the answer. So you can take the screenshot of this, please. Okay. I hope this is clear to you. So similarly, you have the many more questions. I move on to the 9th question. The very next question I'm taking it up because again you will see there is some difference in the question. Fine. I hope समझ में आ रहा है. Yes, some of you asked as written understood to you. I hope others have also understood, please, because ये बहुत ही important question है. Definitely one mark में आता है, 2 marks में भी आता है, 3 marks में आता है. या तो directly it goes with 1 mark and 4 marks question. या तो 6 marks में आता है, या तो 5 marks में chapter आता है. So I hope you understand. Maybe अभी pattern थोड़ी बहुत change भी हो सकती है for this chapter, right? Because आपको पता है कि थोड़ा बहुत syllabus division हुआ है. तो जैसे फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, तो मे बी इसको वेटेज ज्यादा दे. ओके, सो सी टू इट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. आई मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओके, आपने रीड किया हो तो नहीं तो मैं दे रही हूँ. इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP is 4 and -2. यहाँ पे भी 2 टर्म दी है आपको. ओके, 2 टर्म्स दी है, पर जो दूसरा पार्ट जो पूछा है वो थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मुझे पता है कि आप 2 इक्वेशन से अभी आगे का पार्ट कर लोगे, मतलब ए और डी कर लोगे, आप ए भी कर लोगे, फिर जो एक आगे का पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज न्यू फॉर यू. इट इज सेइंग द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, मतलब कि A3 और A9 भी हमें दी हुई है. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. और A3 इसकी 4 है और A9 इसकी -8 है, नाइन्थ टर्म. Which term? आगे क्वेश्चन क्या है? If the third term and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, then which term of AP is 0? मतलब कि कौन सी टर्म इसकी 0 है? That means समझ में आया? तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको अगेन n फाइंड करना है. आप a फाइंड करोगे, b फाइंड करोगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके हमें फाइंड करना है. I hope it is clear to all of you. So I hope you know it. थोड़ा सा स्पीड में जा सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ? 2b is equal to 4. इसका मतलब क्या हुआ? a plus 8d is equal to -8. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट b है. Just
A plus 2b is equal to 4. इक्वेशन सॉल्व करेंगे. A plus 8d is equal to minus 8. Sorry, this will be plus, isn't it? So cancel. 2 plus 8, 10. Am I right? Am I right? आप लोग मेरे साथ हो कि नहीं? मुझे आंसर चाहिए quickly. Am I right? Quickly. Is it clear? Is it correct? थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स मिल सकता है. ओके, नाउ आई थिंक आपके आंसर्स आ रहे होंगे. आई हैव पुट, यहाँ दोनों प्लस साइन है पर ये मैंने नहीं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिया है. यस गुड, यू आर राइट. और इसीलिए मुझे यहाँ पे याद रखना दिस इज 2d minus 8d. बहुत बार आप लोग साइन रखते हो फिर बाद में आप भूल जाते हो. यस, यू आर राइट. सो 2d minus 8d दिस इज minus 6d. ये मुझे याद रखना है. And with the same logic, 4 plus 8. Please don't forget कि आपकी जो नई साइंस है वो आपको कंसीडर करनी है. So 4 plus 8 is 12. It is not 2 plus 8, it is 2 minus 8. No, somebody is wrong again. It's not 10. It is minus 6. And hence, b is equal to 12 upon minus 6. यानी कि b is equal to minus 2. 6 2 are 12 और ये minus 2. ठीक है? And therefore, a plus 2b is equal to 4. इसमें यूज करूंगी मैं a plus 2 into minus 2 4. a minus 4, थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा ले लेंगे. जनरली आप यहाँ पे हरी में 0 कर दोगे. प्लीज डोंट डू दैट. एंड therefore a is equal to 4 plus 4 यानी कि a आपका मिल गया 8. तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गई, आपको d मिल गया. बट नोबडी इज आस्किंग यू दैट. b वर्ड की कौन सी टर्म क्या होने वाली है? कौन सी टर्म आपकी 0 है? एक्चुअली आपको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है. तो अब हम जाएंगे an के फॉर्मूला पे a plus n minus 1 टाइम d. ओके, which is equal to 0. And therefore 8 plus n minus 1 time minus 2, this is equal to 0. Fine, I hope you are with me everyone. And therefore 8 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो क्या आ जाएगा? n minus 1 टाइम minus 2 is equal to minus 8. And therefore n minus 1 is equal to minus 8 upon minus 2. कितना होगा कैंसिलेशन पे? So n minus 1 is equal to 4. 2 are 8. And therefore n is equal to 4 plus 1 5. इसका मतलब कौन सी टर्म आपकी 0 है? फिफ्थ टर्म जो आपकी है वो 0 है. So you will write down the answer. Therefore fifth term of AP is 0. I hope this is clear to all of you. Yes, children. One of the important concept जहाँ पे आपको n फाइंड करना है, कौन सी टर्म नेगेटिव 0 है वो फाइंड करनी है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Yes, I hope you're taking the screenshot. You have the method with you. So I don't need to give you the solution for each time. I'll be discussing general pattern for this. यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मैं सॉल्यूशन नहीं देने वाली हूँ. सो प्लीज रिमेंबर. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यहाँ पे हमें थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दी थी और हमें फाइंड करना था कि कौन सी टर्म है. और एक दूसरा लॉजिक भी आपको लग जाएगा. देखिए, थर्ड टर्म है आपकी पॉजिटिव है और नाइन्थ टर्म आपकी नेगेटिव है. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं नेगेटिव आ रहा है, इजंट इट? अब लॉजिकली देखेंगे तो यस, छोटे नंबर से इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. 4 minus 2 2 फोर्थ टर्म, फिर वापस 2 minus 2 0, फिफ्थ टर्म इज 0 मिल सकता है. बट जरूरी नहीं है कि सारे छोटे नंबर, कभी कभी बड़े नंबर्स में भी होता है. सो दिस इज द वे वी सॉल्व द सम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. प्लीज डू प्रैक्टिस इट. मैंने जो आज किया है वो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 तक किया. सो प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट as early as possible. Okay, and please ask your friends to watch the video and learn the concept. Please, भले आप ट्यूशंस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, but please understand the concept. Because here we discuss how you write perfectly exactly for the board exam. Okay, thank you children and for your attendance also. Thank you. I'm putting the attendance here also. I'm not sending it in WhatsApp group because otherwise just those who are not attending also sending it. So I keep it here only.